तो हेलो यूट्यूब, दिस इज़ फास्टो बैग। चश्मे लग रहे हैं ना मस्त। तो दिस इज़ फास्टो बैग। वी आर इन बैंगलोर, एज यू वुड हैव सीन, देखा होगा आपने इंस्टाग्राम के स्टोरीज़ में, रील्स में। तो हम लोग आ चुके हैं बैंगलोर में। आज निकल रहे हैं। अभी एक्चुअली टाइम हो रहा है अराउंड 11:40। बहुत देर हो गया, मालूम है, सुबह उठ नहीं पाए थे। तो हम लोग निकल रहे हैं नंदी हिल्स की तरफ, जस्ट फॉर अ राइड। तो फिर उसके बाद आज डे बहुत होगा एक्साइटिंग। देर आर 2 सरप्राइजेस फॉर यू इन बैंगलोर, सो स्टे ट्यून्ड। और अब इंट्रो देख लीजिए आप और एंजॉय करिए। We make the strings louder. हम लोग को स्टार्ट हुए घर से ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया एंड इट्स ऑलमोस्ट 12:30 और 33 किलोमीटर्स है। बट लुक एट द स्ट्रेच, पेट्रोल कम है गाड़ी में, बट लुक एट द स्ट्रेच, क्लीन रोड्स। सो आपको अगर सिनेमैटिक्स देखने हैं तो अभी सिनेमैटिक्स आ रहे हैं। और मैं सिटी में व्लॉग नहीं किया था क्योंकि ट्रैफिक था और मास्क लगाना पड़ता है। अभी भी मास्क निकाल के बस व्लॉग कर रहा हूँ, फिर उसके बाद अभी फिर लगा लूँगा। सो वी आर जस्ट हेडेड टू नंदी हिल्स। कुछ सी नंदी हिल्स सीधे दिखा रहा है एंड वी आर हियर एट द सिग्नल। से हाय, हाउ यू फीलिंग? यो नंदी हिल्स इट इज, इनक्रेडिबल इंडिया। Nandi Hills, 21 kilometers. The Rocky Mountain, guys. The Rocky Mountain. So अब Nandi Hills है around 20 kilometers. So guys, you know the drill. If you're still watching it, please do like, share and subscribe और कर देना एक अच्छा सा कमेंट। और कमेंट करके नीचे बताना कि सिनेमैटिक्स कैसे लगे। स्पीड ब्रेकर 346 minutes later. So guys, as you could see, it looks crazy. It's peaceful है, silent है, अच्छा है। बड़े बड़े पेड़ हैं, ट्रैफिक कम है, पोल्यूशन नहीं है। It's like the country side में है। So we just took a small break, refreshment. We just took a refreshment break and this is the car. हाँ, तो कार थोड़ी डल दिख रही है। शाम में you'll get a better car. We'll make a makeover इसका. So stay tuned and watch the video, guys. And there's one more thing. This car is a manual base model. So just wait. और अब ट्रैफिक आने वाला है, so let's get back in the car and we'll just continue the vlog.
Nandi Hills, 8 kilometers. Let us go, boys. Guys, the ghat has started. और कैफे के A43 पुलिस वाली औरतें टोमेटो सॉस बनने के लिए तैयार और चढ़ाई शुरू हो चुकी है गाइस. सो जस्ट fasten your seat belts. I hope it's better than Arku. और बहुत ज़्यादा पुलिस चेकिंग बैरियर्स लगे हुए हैं हर जगह. Just look at the view, guys. बहुत पतली रोड है. It is a single way. और डायरेक्ट पहाड़ है साइड में. There must be chances of landslides also. कैसा लग रहा है? Guys, so comment करके बताना कैसा है लोकेशन एंड द वे एंड इफ यू आर फ्रॉम बैंगलोर और नियर बैंगलोर आप लोग का एक्सपीरियंस कैसा था नंदी हिल्स जाने का. स्पाइस. बर्फ और मिर्ची एक साथ. क्या बर्फीला दिखता है, क्या मिर्चीला दिखता है. चलो देखते हैं. तो यहाँ पे है 13 चीज़ें देखने की. 13 थिंग्स. सो दिस इज द व्यू. हाय बोलिए. So we are just gonna walk up. So guys, enter हो चुके हैं. We were charged for the ticket. Now let's see. यहाँ पे ठंडा पीसफुल है. Let's see what happens next. क्या होता है. So this is the first time experience Nandi Hills. It was a ghat of around 7 to 8 kilometers. Then we had to park our cars below. I'm not sure कि कार नहीं अंदर अलाउड नहीं है, मगर 2-3 बाइकें दिख रही हैं अंदर. I'm not sure. That may be the caretaker वालों की बाइक होएगी. But it's peaceful और ग्रीनरी बहुत है. Huge trees, greenery. There is CCTV camera though. So change of plan. टाइम ज़्यादा हो गया. It's almost 1:42 बजने वाले हैं. भूख लगी है सबको. So actually जाना था हम लोग को वहाँ पे. You could see there. That was the open thing. वहाँ से दिखता है. But compromise होके we have other plans. Vlog में रिकॉर्ड करना है. Vlog भी लंबा हो जाएगा. So we are just going back now. So देखते हैं. But you could see. So we are just returning back. So देखते हैं क्या होता है. So this is the way actually. We didn't know that there was a 4-wheeler का way. This is the road actually where we can come from. So we are just going back. We were by walk. As you could see the view. Supposed to come in the morning. Early morning जब सनराइज होती है तब अच्छा रहता है. हम लोग बहुत लेट आए. It's almost afternoon. Let's go to Indian Paratha Company. Let's eat parathas. यहाँ से कितना दूर है इंडियन पराठा? 25 minutes. Let us go. अब खाएंगे मक्खन वाले पराठे. Are you ready? What? मक्खन वाले पराठे. I don't like मक्खन वाले पराठे. I like आलू वाले पराठे. वाह, अमीरी छाई हुई आजकल. इन्फ्लुएंजा, सस्ते इन्फ्लुएंजा. How do you feel, my boy?
व्हाट्सअप। बंदर। सो गाइस खाना हो चुका है, तो कैसे लगे सिनेमैटिक्स? आई कुडेंट, धूप बहुत तेज़ है। सो खाना देखने में टेस्टी था। इंडियन पराठा कंपनी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इज़ गुड। इट्स ऑन द मिडल ऑफ द हाईवे। एयरपोर्ट का गली नहीं लेके लेफ़्ट लेके सीधे आओ। इट्स अराउंड 20 किलोमीटर्स। सो मुझे कॉपीराइट नहीं आना था, तो मैंने बस सिनेमैटिक्स बना लिए खाने का। बहुत ज़्यादा टाइप के पराठे हैं। इट्स गुड ऑल एंड ऑल। सो नाउ वी आर हेडेड बैक होम। तो अब निकलते हैं शाम में एक और एक सरप्राइज़ है आप लोग के लिए, और शायद घर जाने से पहले एक और एक सरप्राइज़ आपको मिल जाए। 2 सरप्राइजेज एज आई टोल्ड यू बिफोर। सो देखते हैं जाके क्या होता है। सो स्टे ट्यून्ड गाइस।